औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ड्रग्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में और इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जो इसका दूसरा लेक्चर है, उसमें हम एमाइनोग्लाइकोसाइड के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में और इसी तरह कि ऑर्गेनिज्म किस तरह इसको रेजिस्टेंस काज करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो मेनली यूज़ होता है एरोबिक ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, pneumonia, meningitis, septicemia and the infected burns. They are also used against nosocomial infections due to this gram-negative rods. Nosocomial means which are acquired in the hospital. The first one is the aerobic gram-negative infections like UTI, pneumonia. The second one is the nosocomial infections due to gram-negative rods. The third use is that it is used against the gram-negative infections due to the zoonotic organisms like plague, brucellosis, and tularemia. It is also used against the gram-negative skin, eye, and ear infections. They are also used. These were the use of against the gram-negative organisms. All were used against the gram-negative organism. It can also be used against the gram-positive infections like bacterial endocarditis due to staph viridans and enterococci. Bacterial endocarditis due to staph viridans and the enterobacchi, and they are used against the TB caused by different types of mycobacterial tuberculosis. So these were some uses of aminoglycosides. Now talking about the adverse effects के बारे में बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या काज करते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी। एंड व्हाट इज ऑटोटॉक्सिसिटी? इट इज डैमेज टू द एयर, डैमेज काज्ड बाय द एमाइनोग्लाइकोसाइड टू द एयर। एंड दिस डैमेज, ये डैमेज जो है दिस may produce vestibular or cochlear symptoms depending upon the structure which damage. Like अगर एमाइनोग्लाइकोसाइड वेस्टिब्यूल के सेल्स में एक्यूमुलेट हो तो और इस तरह इसको डैमेज करे, वेस्टिब्यूल को डैमेज करे, तो ये वेस्टिबुलर सिम्टम्स लाइक नाजिया, वोमिटिंग, निस्टेगमस, डिजीनेस, हेडेक, वर्टिगो, एटेक्सिया काज करते हैं। And this vestibular symptoms or this vestibular toxicity mostly occurs with the drug like streptomycin and the gentamicin. ये याद कर ले कि मोस्टली स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन के साथ मेनली होते हैं। It also causes, now if it damage or is accumulate in the cochlea, so it will damage the cochlea. Cochlea को damage करेगी, produce the cochlear symptoms like deafness and tinnitus. And these symptoms or this cochlear damage is much more with the kanamycin, amikacin, neomycin. This cochlear toxicity is much more with drugs like kanamycin, amikacin, and neomycin. Now, the chances of ototoxicity is much more in the people like older people, those people जिनको already air यानी ototoxicity पहले से हो, and those people which use other ototoxic drugs like vancomycin, minocycline, and lobe diuretics. If they take aminoglycosides, so they are much more prone to the ototoxicity of aminoglycosides. The important point is that if this aminoglycoside are taken during pregnancy, it can also damage the ears of fetus and cause fetal ototoxicity if used during
pregnancy. So care must be taken to the women who are pregnant. दूसरा जो important adverse effect है aminoglycoside का है वो है nephrotoxicity. और this nephrotoxicity produced by aminoglycoside is due to the reason कि ये renal cortex में accumulate होता है. renal cortex में accumulate होता है. It is affinity for the renal cortex. और जब ये accumulate होता है तो यहाँ पर renal cortex के cells को nephron को damage करता है due to any reason like immunological reason or any reason. And this nephrotoxicity is much more with the neomycin and very much less with the streptomycin. Neomycin nephrotoxicity, as we have already discussed, it is much more with the neomycin and much less with the streptomycin. So किन लोगों में चांसेस ज़्यादा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी का? तो एक दो है वो है ओल्डर पीपल. दूसरा वो लोग जिनमें पहले से ही किडनी की प्रॉब्लम मौजूद हो. तीसरे जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स लेते हो लाइक एम्फोटेरेसिन बी, वेंकोमाइसिन, सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन, अगर ये ड्रग्स पहले से लेते हो और हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को देना शुरू किया तो these people are more prone to be cause nephrotoxicity by the aminoglycosides. The third adverse effect is in the neuromuscular blockage, and this neuromuscular blockage is due to the fact that this aminoglycoside inhibit the acetylcholine release from the presynaptic nerve terminal, causing apnea, difficulty in breathing difficulty. And it also causes muscular paralysis. And the mechanism of action is that this aminoglycoside compete with the calcium at the presynaptic terminal. For example, this is the presynaptic terminal. The usual mechanism is that the calciums enter the presynaptic from the outside membrane. यहाँ पर enter हो जाता है तो यहाँ पर वेसिकल्स के साथ बाइंड हो जाता है. वेसिकल्स के साथ ये वेसिकल्स से कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बाइंड हो जाता है और इसको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने देता है. जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो इस तरह एसिटाइलकोलिन बाहर निकल जाता है. तो अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या करता है कि ये एट प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल इस कैल्शियम के साथ कंपीट करता है अंदर जाने के लिए और इसी तरह कैल्शियम अंदर नहीं जाता और ACH यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता. इसी तरह काजिंग एपनी एंड मस्कुलर पैरालिसिस. It also causes hypersensitivity reactions like skin rashes, struck fever, and eosinophilia. So these are the some adverse effects caused by the aminoglycoside. The first one is the ototoxicity, the second one is the nephrotoxicity, the third one is the neuromuscular blockage, the fourth one is the hypersensitivity reactions. Now coming towards the mechanism of resistance produced by the organism against the aminoglycoside. तो जो पहला mechanism है वो है कि inactivation of drug by the bacterial enzyme aminoglycosides. बैक्टीरिया में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो aminoglycosides को इनएक्टिवेट करते हैं, इस तरह इसके एक्शन को स्टॉप करते हैं. सेकेंड मैकेनिज्म दैट इट काज डिक्रीज एंट्री इनटू बैक्टीरियल सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल वॉल के थ्रू जब ड्रग एंटर होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो बैक्टीरिया कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करता है कि लेस अमाउंट ऑफ ड्रग बैक्टीरिया के अंदर जाए थ्रू द सेल वॉल. और इट कैन प्रोड्यूस राइबोसोम्स व्हिच हैव मच लेस affinity for the drug. By producing ribosome which have much less affinity for the drug, these were some mechanism by which the bacteria produce resistance against aminoglycosides.